हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इजी लर्न। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास इंग्लिश लेसन नंबर 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट इसके क्वेश्चन एंड आंसर यानी इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसके इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आप कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो ट्रू है, सही है या गलत है। ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत। फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट वाला है द यंग सीगल वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द एबिलिटी ऑफ हिज विंग्स। तो ये जो है वो ट्रू है। द यंग सीगल्स पेरेंट्स गाइडेड एंड इम्प्रूव्ड हिज सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। ये भी ट्रू है, पहला और दूसरा ट्रू है। थर्ड, when the young seagull pretended to be falling asleep his parents took notice of him। ये false है। Flying across the young seagull the mother dropped into his beak a piece of fish। ये जो है ये भी false है। पहला और दूसरा true है, तीसरा और चौथा जो है वो false है। Question number 2, complete the following statements। A, the seagull is afraid to fly because he thought that his small, short wings would never support him to fly and he would fall and drown in the sea. B, young birds are afraid to make their first flight because they are not confident at their first flight. C, human beings find it difficult to face great challenges because I think human beings also find it a challenge to take its first steps. It is their natural instinct. When they try to stand and then to take further steps, they are afraid of falling and getting injured. So they are cautious and alert but do not give up. Question number 3. Read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your book। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स पर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं और उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला है प्लेंटिवली, तो इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे, देखिए द यंग विडो प्लेंटिवली मॉर्न व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड्स डेड बॉडी इन अ कॉफिन कवर्ड बाय ट्रैकलर। उसके बाद है मॉन्स्टर्स, अ मॉन्स्टर्स वेव द बोट विथ सम फिशरमैन इन इट। अब उसके बाद है बेकॉन्ग, बेकॉन जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपको उसका है दे वेयर ऑल बेकॉनिंग हिम टू जॉइन देयर टीम बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब है यहाँ पे देखिए करवेटिंग, करवेटिंग आपको दिया हुआ है द ईगल वॉज करवेटिंग टू लैंड ऑन टू द ग्राउंड टू कैच हिज प्रे। उसके बाद है वेट और सॉर, तो वेट का देखिए तीसरा वाला ये ही वेटेड इज नाइफ टू कट द अनवांटेड प्लांट्स इन द गार्डन। और फोर्थ है लास्ट वाला जो है सॉर वाला द रॉकेट सॉर्ड अप टू इनटू द एयर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी मदद से आपको यहाँ पर जो है वो ब्लैंक्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं उसको आपको कंप्लीट करना है वर्ड्स से लेकर। देखिए पहला वाला है अरुण इज फुल ऑफ कोवर्डाइस। इसके बाद है द वायलिन प्लेड वेरी श्रीली एंड मैरिली। 3 है रवि सेड आर यू रियली अफ्रेड टू द डार्क। द वुल विलेज प्लंगेड इनटू डार्कनेस। द लायंस डिवॉर्ड देयर प्रे हंग्रीली। ही स्कीम्ड थ्रू द रिपोर्ट। 7th है one by one the stars appeared in the sky। Question number 5, read about the space mission of Sunita Williams। Imagine you are going to interview her। Frame 10 to 12 interview relevant question regarding, है ना, आपको क्वेश्चन बनाने हैं 10-12। ये वाला देखिए आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन टू सुनीता विलियम्स। हेलो मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट्स इन द स्पेस मिशन। मे आई आस्क यू अ 5 क्वेश्चन अबाउट योर करियर एंड मिशन।
First, could you please tell me about your birthplace, family, and early education? What motivated you to do MSc in engineering management? Where did you do it? What was your experience as a naval aviator in 1989? When and where did you begin your candidating training? When were you selected by NASA for program? Will you please tell me about your experience at NASA? How did you feel when you were aboard the space shuttle Discovery to join expedition 14? How many days did you stay in the space tiring in the expedition 14? You have the record in the space by a woman. What was that record? What can you tell me about your second? What was your part in it? You took to the ISS a copy of Bhagavad Gita and figurine of God, Ganesh, and samosas. What was the thought behind it? How did the government of India honor you? Why? What is your message to the young Indian generation? अब है क्वेश्चन नंबर 6. Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle, swimming, or any skill. Take hints from the web to complete your write up. Learning bicycle challenges confidence, risk, daring, fear. Answer: riding a bicycle. Though some people think that riding a bicycle is a very simple easy thing, but it is not true. It is a challenging job. When you begin to learn cycle, you must have to drive away and win over the fear of falling. While riding a cycle, you are bound to fall once or twice or more, and may get injured. So you must be hold and forget your fear of falling. Secondly, as a beginner, don't fully depend on a trainer or a supporter. Otherwise, you will never learn cycling. You should ride on your own with the determination. You must be steady, stable, and patient. You will have to look straight ahead of you and not to handle or pedal or anywhere else. Sit properly on the seat and hold the handle firmly. Balancing is the next task challenge. Be alert and ride the cycle carefully. Pay attention to the vehicles coming in your way, and you should be able to avoid them all. There will be a possibility of an accident. Your concentration must be only on riding. Remember the traffic rules and follow them. After practicing lot, you will be able to ride a bicycle confidently. ये थे इसके इंग्लिश वर्कशॉप जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। बाय।